वेलकम वेलकम ऑल ऑफ यू डिवाइन सोल्स। आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सो टुडे सेशन इज ऑन द मिराकल्स ऑफ साउंड हीलिंग। यू कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ विथ साउंड हीलिंग। साउंड हीलिंग से आप अपने शारीरिक, अपने मानसिक और अपने भावात्मक अवरोधों को दूर कर सकते हैं और एक बहुत ही स्वस्थ और उन्नत जीवन आप जी सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति शब्द से हुई थी। हमारे सभी ग्रंथों में लिखा है। नो, शब्द को ब्रह्म माना, अनाहत नाद, ओंकार। शब्द से इस पूरे ब्रह्मांड की, इस पूरे सृष्टि की रचना हुई। साउंड थेरेपी, इट कैन हेल्प यू इन हीलिंग सो मेनी डिजीजेस। जस्ट लाइक इफ यू हैव अ क्रॉनिक पेन, आपको बहुत बहुत पुराने पुराने पेन्स होते हैं कई कई लोगों को, तो इट कैन हेल्प यू इन हीलिंग दोज पेन्स। आपके स्थायी दर्द होते हैं, जैसे आपका बैक पेन हुआ, आर्थराइटिस हुआ, इन सब को ठीक करने के लिए साउंड हीलिंग बड़ा ही कारगर सिद्ध होता है। फिर दूसरा, आपके बहुत सारे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, some individuals they like irritable bowel syndromes हो रहा है, gastritis है, और या acid reflux हो रहा है, so they all can be cured through your sound healing techniques. Third is the respiratory conditions. Sound healing can help improve your respiratory health. जैसे बहुत से लोगों को अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, तमाम एलर्जीज हैं, they can all be cured by sound healing. फिर कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, इसका बहुत बहुत हीलिंग, साउंड हीलिंग के द्वारा आपका कार्डियोवास्कुलर हेल्थ इंप्रूव होता है, एंड इट रिड्यूसेस द रिस्क फैक्टर्स विच आर एसोसिएटेड विद द हार्ट डिजीज या हार्ट अटैक से। फिर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, आर्थराइटिस है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, ये सारे जो डिसऑर्डर्स हैं उनको हेल्प डायग्नोस करके उनको ठीक करने में साउंड हीलिंग का बड़ा महत्व हो रहा है। फिर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, जैसे बहुत से लोगों को पार्किंसन डिजीज हो रहा है या एपिलेप्सी है, तो इन सब में भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं साउंड हीलिंग के, एंड इट हैज लेड टू एन इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ through this sound healing practice. Even cancer, you know, although sound healing is not a direct cure for cancer, but it helps in alleviating so many cancer related symptoms. जो कैंसर में पेन्स होते हैं, जो एंजाइटी है, जो फैटीग होता है, और so much, so sound healing can contribute in overall well-being during the treatment of diseases like cancer. Even your sleep disorders, आपको अगर नींद ना आने की समस्या है, साउंड हीलिंग टेक्निक्स, वो उसमें रिलैक्सेशन है, गाइडेड मेडिटेशंस है, एंड दे इंप्रूव योर स्लीप क्वालिटी, और दे इवन एलिवेट इंसोम्निया, बहुत से लोगों को होता है, तो इट हेल्प्स इन क्यूरिंग दोस थिंग। इवन योर हार्मोनल इम्बैलेंसेस, बहुत से लोगों में हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशंस होते हैं, मेनोपॉजल सिम्टम्स हैं, और कुछ थायराइड डिसऑर्डर्स हैं, उन सबको ठीक करने में साउंड हीलिंग इज वेरी वेरी पावरफुल। Even lot of skin conditions, although this is not replacing a medical treatment, a proper medical treatment, but lot of sound healing practices, they support skin health. They contribute to even manage conditions of eczema या psoriasis या acne, और इन सबको हेल्दी करने का, हमारे स्किन को भी हेल्दी करने के लिए साउंड हीलिंग हैज बीन शोन एज वेरी वेरी इफेक्टिव।
पर इन सब के अलावा मेंटल और इमोशनल लेवल पर साउंड हीलिंग का जो इफेक्ट करता है, साउंड हीलिंग कैन एनहांस योर पॉजिटिव क्वालिटीज, the positive qualities can be improved. Say for example, you can have an increased self confidence, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. Sound healing can boost your self confidence by it promotes an inner peace, a self assurance. Individuals become more confident in themselves and their abilities. They are better equipped to pursue their goals. दूसरा है इट इंप्रूव्स योर फोकस एंड क्लैरिटी. आप सोचिए साउंड हीलिंग प्रैक्टिस, इफ यू कैन शार्पन योर फोकस, इफ यू कैन एनहांस योर मेंटल क्लैरिटी, तो आपको अपने जो लाइफ के गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनमें कितना क्लियर विजन आपको होगा. यू विल बी सो फोकस्ड इन योर लाइफ. फिर इट इंक्रीजेस योर क्रिएटिविटी. साउंड हीलिंग it stimulates your creativity by clearing all your mental blockages. It opens your mind to new ideas, new perspectives. और जब creativity flourish होती है, तब आपका क्या आता है दिमाग में? Innovation. You innovate new things. You are able to solve the problems of life. You can think outside the box. कहते हैं ना, बहुत से सॉल्यूशन हमें एकदम से कुछ इंट्यूशन से मिलते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स. सो यू फाइंड इनोवेटिव सॉल्यूशंस टू लाइफ प्रॉब्लम्स, टू योर बोथ ऑफिशियल फैमिली प्रॉब्लम्स और इवन वर्क प्लेस प्रॉब्लम्स. तो आप कितना इफेक्टिव होते हैं अपना काम में. देन यू हैव सो मच ऑफ इमोशनल रेजिलियंस. आप इतना स्ट्रांग हो जाते हैं इमोशनली कि लाइफ में जो छोटे मोटे सेटबैक्स आते हैं और छोटे छोटे चैलेंजेस जो आते हैं लाइफ में, तो यू कैन ओवर पावर ऑल दोस विद लॉट ऑफ डिटर्मिनेशन, लॉट ऑफ ग्रेस. सो दिस इज योर इनर स्ट्रेंथ व्हिच कैन कल्टीवेट. सो अब इवन थोड़ा बहुत एडवर्सिटी आ जाता है लाइफ में, यू कैन स्टिल बाउंस बैक. यू कैन लर्न फ्रॉम द सेटबैक एंड यू कैन परसिवियर इन द face of all the obstacles of life. And then when you are able to do that, no one can stop you from achieving so much success in life. You also get to have improved communication skills. You improve your self-expression. You start listening actively. You develop empathy because आपके अंदर में you are connected to that divine divinity all around. So imagine करिए कि when you are able to communicate your thoughts, your feelings more clearly with others, you can build stronger relationships. You can collaborate more easily, more effectively. You can inspire others with your vision and ideas. So कितना कुछ कर सकते हैं आप इस इस हीलिंग की वजह से जीवन में अपना. यू कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ. ध्वनि चिकित्सा के फायदे अनगिनत है. ये तो बहुत थोड़े से मैं आपको बता रहा हूँ. एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ बिफोर वी मूव अहेड. The human body operates like a musical instrument, with every organ, tissue, and bone in a constant state of vibration. This knowledge was mostly lost to antiquity until recently. When I was in school, I was taught to think in terms of cells as little bags of salt water and fragile neurons and tissue. But the new science is telling us that the average human has about 50 trillion cells in the body, and every one of those cells has an electrical potential of about 0.07 volts. It is about 3.5 trillion volts of electrical potential that we have access to in our bodies for healing. Each part of your body has a certain vibration that it needs to have in order to be in a harmonious state, a coherent state, a healthy state. When it gets into a disharmonious state,
that's when it gets into a diseased state or illness starts to set in. When healthy, all parts of the body resonate in coherence with harmonic vibrations, which we could call sound health. Frequency plus intent equals healing, which means the sound we make, coupled with the intention or the consciousness we put on the sound, creates the outcome of the sound. And this includes our voice. So we want to use sound in a very coherent, very intentional way to help us heal. The human body is an elaborate instrument with its own natural maintenance system. Every cell is a transistor. Every cell is a resistor. Every cell is a capacitor. We are gated circuits. We are photon emitters, photon receivers. We store and retrieve information. And we do all of these things with the ability to self-regulate. We are the only form of life that can self-regulate this soft technology that we have in our bodies. The human motherboard includes two vital centers, the heart and the brain. Our brain puts out an electromagnetic field. Our heart puts out an electromagnetic field. When they are locked in resonance or synchrony together, that's called heart-brain coherence. It is interesting that the word heart contains both the words ear and hear. It does seem to be the case that words and music can touch us very deeply emotionally on a heart level. Combined with music's ability to structure brain waves, the head and the heart can come into coherence, producing a vast expansion of the biofield, and at times expanding the consciousness into mystical states. When you work with sound, you get deep breathing and deep gratitude and appreciation in order to achieve heart-brain coherence. And then if you tone a sound like an ah, which is a great sound for the heart center, or the ah, or a hum, it is possible to create an interface between yourself, other people, but also what I call the Gaia matrix, the electromagnetic field of our planet. Using these techniques, we can potentially assist the brain in aligning or balancing our organs, glands, meridians, chakras, and more. Or we can tune our bodies by using simpler sonic remedies. Ancient techniques for healing are also available. You can go to a sound healer and you have some that work with shamanic tools like the drums, the didgeridoo, where you have the crystal singing bowls, Tibetan bowls. There's all kinds of different sound instruments that can be used. With the crystal bowls, it feels like it's opening up into this almost angelic-like realm of frequency that people feel very open to. They feel almost like there's this divine feminine or angelic energy that is singing to them. And there's something about that that really calms the nervous system. The word chakra originates from the Sanskrit language, and it means wheel. They are essentially vortexes of spinning energy, interacting with various physiological, neurological, and emotional systems within the body. Each chakra has its own vibrational frequency, which is depicted through a certain color, musical tone, geometry, and planet.
Your body is vibration. It's incredibly receptive to sound, and it's receiving sound and wants to come in resonance with it. Sound vibration is moving through your tissues, through the water of your body. What inventions and discoveries might arise from this new era of sound science? To begin, we can reduce or even eradicate disease. We know now that all matter resonates at a specific frequency. And if you look, for example, at a cancer tumor, obviously the atoms in that tumor are resonating at a frequency. If you can isolate the frequency of the atoms in the tumor, and you can use a sound device to create a resonant frequency that actually cancels it out, all of a sudden, you can destroy that tumor, leaving all the healthy tissue around it untouched. Everything needs to move towards sound healing. It's going to be healthier, it's going to be safer, and it's going to have better results. We believe that now all the research that we're conducting is leading us ever closer to a future of sound healing rather than pharmacologic healing, and a new paradigm for medicine itself. The human body. This was Hamara Shraddhe Guruma. She has been teaching sound healing since last 30 years, and lots of foreign students, they have been coming to her, visiting her. And, this foreign lady, she had a very unique problem, and she traveled all over the world, but when she came to Guruma, I'll just show you how happy she is. ये कितना खुश हो रही है ये बजा के जब ये सीख रही थी गुरुमा से. तो बजाना सीख रही है, and this lady is so happy. 5 days, whatever you come for. One day you will not get the result. It's fine if you take a session. You don't say no to anyone. It's up to them to choose it. If they come for 3 days, healing. Just give little. So मैं अब गुरुमा से आमंत्रित करूंगा कि गुरुमा अब आप आए और हमें इसके बारे में थोड़ा और बताएं, साउंड हीलिंग के बारे में. आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुमा. प्रणाम गुरुजी और पूरा प्रणाम, ग्रुप, प्रणाम. सबको प्रणाम करती हूँ, वेलकम करती हूँ. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने आज का टॉपिक लिया है और मेरे दिल को ये बहुत टच करता है, छूता है. बहुत इंटरेस्टिंग है, साथ में इसकी पावर बहुत है. और दोनों वर्गों के साथ मैंने काम किया है. प्रणाम सबको. दोनों वर्गों के साथ काम किया है. एक वो वर्ग है जो कि सिर्फ साउंड हीलिंग ही सीख रहा है, लेकिन एक वो वर्ग है डिफरेंट सेक्शन जो हीलर भी है और साउंड हीलिंग भी आ रहा है, उसको साउंड हीलिंग भी सीख रहे हैं. रेकी भी, दोनों रेकी की भी कर हीलिंग, रहा है. जी जी, वो दोनों की हीलिंग कैपेसिटी में अंतर है, इसमें भी अंतर है एक बहुत ज्यादा. तो ये जो साउंड हीलिंग है, एक कहते हैं ना बॉम्ब शेल ऑफ हीलिंग. कुछ नहीं ऐसी चीज है जिसको हम कहें ये ठीक नहीं हो सकता. इट इज बियॉन्ड. ओहो. अब इसका रीजन है और बहुत साइंटिफिक है, बहुत प्रैक्टिकल है, क्योंकि वी आर जस्ट नथिंग बट वाइब्रेशंस. हमारे ऑर्गन्स कुछ नहीं, वो भी एक फील्ड पे वाइब्रेट कर रहे हैं. एक ईश्वर ने जो हमको ऐसा बनाया, वो एक समझ लीजिए ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें सारी वाइब्रेशंस हैं, डिफरेंट हर्ट्स आर देयर. राइट. लेकिन एक्चुअली हम हीलिंग तो करते हैं, उसी को सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं. पर हम लकी हैं कि हम इंडिया में हैं, भारतवर्ष में हैं, और भारतवर्ष की ये देन है तिब्बतियन बाउल्स. सबसे पहले ये यहीं पे शुरू हुआ, क्योंकि ये एक ट्रेडिशनल हीलिंग सिस्टम बुद्धिस्ट मॉन्क के साथ में है. और वो
इतना ज्यादा इससे अपने विलेजेस और सब चीजों को प्रोटेक्ट करते थे, जो भी आ रहा है उसको आनंद क्यों आता था, बुद्धिज्म में एंटर होके उसमें रूम में बैठ के शांति क्यों मिलती थी, वो वाइब्रेशंस इनके चलते रहते हैं। जी रात में ही पूरे गांव गांव जाके बजाते हैं, सेव करते हैं। तो लोग तो ऐसे ही समझते थे हमको ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ऐसे बजाते हैं, पर नहीं, आपकी एक पूरी हीलिंग सिस्टम जो है ना वो स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल क्योंकि जब ये साउंड एनर्जी में कोई आता है तो सेल्स बदलने लगते हैं, तुरंत ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं। राइट। और जब वो ट्रांसफॉर्म होते हैं तो जो भी बीमारियां वो हिलने लगती हैं। वो गुरुमा, कोई इसका भी हो। डीएनए पर भी इफेक्ट पड़ रहा है। अभी ये लोग बिल, बोल रहे थे, अभी बिल्कुल साइंस ने ये रिसर्च किया है कि डायरेक्ट डीएनए चेंज होता है बिल्कुल साउंड जैसे ही साउंड का आता है ना, तो वही है ना, सेल्स पे एकदम से वो स्ट्राइक करता है। बिल्कुल और वहीं पे डीएनए या एवरी सेल हैज दैट पार्ट। तो जो कार्मिक है, आप उसको हेरिडिटरी डिजीजेस कुछ भी बोलिए, जी एनी डिजीज जो कहते हैं कि पार्किंसन, ब्रेन, इस बच्चों के लिए, या कोई भी किस तरह का, ब्रेन एक ऐसी चीज है जो जल्दी किसी भी मेडिसिन से हील नहीं होती है। जी न्यूरॉन्स एक ऐसी चीज है जो बिल्डअप नहीं होते, क्रिएट नहीं होते। मेरे पास एक डॉक्टर की बच्ची थी, मतलब बड़ी थी, 32 साल की बच्ची थी। उसके मदर फादर देवर डॉक्टर्स, उनके भी सारे रिलेटिव्स एंड उनका एसोसिएशन ही डॉक्टर से था। तो उसको खास प्रॉब्लम हुई थी। शी केम टू मी एट दैट टाइम। शी डिडंट टेल हर मदर कि शी इज कमिंग टू अ हीलर, क्योंकि भाई वो एक ऐसे बैकग्राउंड से आ रही है जहां पे हाँ, साइंटिफिक everyone has बैकग्राउंड। a great faith in science only, not राइट beyond that, like हाँ ना, not beyond that। बिल्कुल तो जब किसी ने बताया तो वो मेरे पास आई है, और वो जो क्योर हुई है, तो उसकी मदर खुद जानती थी कि ये ऐसी चीजें थी कि वो सालों लगा रहे थे और वो ठीक नहीं हो रही थी। तो दे कुडंट बिलीव थी, विद इन 2 months उसके अंदर जो चेंज आया, वो कहाँ कहाँ नहीं रही, अपोलो से लेके कहीं कहीं पूरे, मतलब इंडिया से बाहर हॉस्पिटलाइज कहाँ कहाँ नहीं हुई, और ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी दे स्पेंड ऑन हर। राइट Then her mother came to meet me, and she was very thankful. She started believing in the system, and then she wanted to see me in person. फिर उन्होंने मुझे बताया कि I rang up to all my doctors, whether they were in India or abroad, and I told that my daughter has taken healing and she is all right now. She had some problem in her brain. So one of the doctors said, just keep in touch with healing, because we cannot do with neurons. Only this healing, sound healing, can do with neurons. Please let her take healing for 1 year at least. वंडरफुल। ये डॉक्टर के वर्डिक्ट से सही। उन्होंने फिर मुझे बताया कि अभी आप इन्हें छोड़िए मत, अभी आप इनके करते रहिए, बुलाते रहिए। तो मैंने कहा नहीं, इनको सिखाते हैं और ये बेटर है, सीखें, ये विद्या हमारी है, हम ये क्यों नहीं पहचानते? क्योंकि अब जो है ना, फॉरेनर्स आर कमिंग हियर टू लर्न एंड दे आर गोइंग बैक। ठीक है ना? तो क्या है, वो रिसर्च भी कर रहे हैं, वो इसमें डूब भी रहे हैं, वो इसको लेके भी जा रहे हैं, ऑल सॉर्ट्स ऑफ विद्यास दे आर टेकिंग। पर अभी हमारे समाज में अभी साउंड हीलिंग थोड़ा एट डिस्टेंस लगती है मुझको। राइट। अभी वो अवेयरनेस अभी मिसिंग है, आई थिंक, अभी अपना नॉर्मल पीपल। अब ये सोचिए कि अर्थ की कोई एक विशेष वाइब्रेशन है, और हमारे अर्थ के अराउंड कुछ स्पेस, जो भी एटमॉस्फेयर, उसकी कुछ एक अलग वाइब्रेशन है, और हम उस अर्थ पे हैं और हम सिंक्रोनाइज नहीं हैं। तो क्या होगा कि आपकी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी ना, वो आपके सेल्स में ही आएगी। बिल्कुल। तो सिंपल, अगर मैं अपना और अपने एनवायरनमेंट का, दोनों का अगर साउंड से कनेक्शन करूं, हीलिंग से, तो यूनिसन में आ जाएंगे। जैसे अभी वो बता रहे थे ना कि ब्रेन एंड हार्ट, यस, हाँ, कोहेरेंस। क्योंकि आप सबसे ज्यादा अगर सबसे इंटेंसिटी पे वाइब्रेट करता है, दैट इज योर हार्ट फर्स्ट एंड देन ब्रेन। राइट। तभी आपका हार्ट जो है सबसे पहले सिंक करता भी है। राइट। है ना? तो इसको हम बहुत आसानी से
ठीक कर सकते हैं. साउंड हीलिंग इज नॉट म्यूजिक. हमको ये अलग करना है. हाँ, साउंड ये बात हीलिंग राइट. इज नॉट म्यूजिक. एक जो म्यूजिक है, एक लाइट हो सकती है, क्लासिकल हो सकती है, सब कुछ चीजों पे आपका असर होता है दिमाग पे. यू enjoy music. But with sound healing, we heal the body, every part of us, every system, not only the human body, but you can clean your environment. वास्तु का बहुत बड़ा हिस्सा है. Energies in the environment. Yes, I have done all sorts of work. And Wow. my students, those who have learned this and went away, and then they told me how they have cleaned up their environment, which was disturbing them, and how the bowls, they helped them. This healing helped them a lot. तो डिप्रेशन तो यूं ही चला जाता है, उसकी तो आप छोड़ ही दीजिए. एंशियसनेस तो यूं ही चली जाएगी, छोड़ दीजिए. पर ड्रेडेड डिजीजेस, सारे सेल ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे. वन हैज टू बिलीव इन दिस सिस्टम, कीप इन टच. तो बेस्ट होता है कि आप लर्न करो. राइट. आज की तारीख में इन्वेस्ट कहाँ करो? द बेस्ट थिंग, एक इकोनॉमिक इन्वेस्ट है, मैं बोलती हूँ भाई, वो कर लो आप. और एक बवंडर इन्वेस्टमेंट आप समझ लो आपको मिल गया है उसका. अरे ये इन्वेस्टमेंट तो गुरु माँ अपने लिए नहीं, पूरे परिवार के लिए, हाँ. ये तो, और उनका आप पूरा डीएनए करेक्शन कर दे रहे हो. आगे आने वाली पीढ़ियां आपको धन्यवाद देंगी. इसके साथ मैं बहुत इंटरेस्टिंग आपको बात बताऊं कि आई हैव स्टार्टेड चार्जिंग वाटर विद दिस, और उसका भी असर मिराकुलस. जी जी. मतलब जैसे कि हम मैनिफेस्ट भी इससे करते हैं. तो यही नहीं है कि हम अपने आप को ठीक कर रहे हैं, एनवायरनमेंट ठीक कर रहे हैं, पर हम एक पॉजिटिव, एक इतना सुंदर इसका जो वाटर बनता है ना, वो मेडिसिनल वैल्यूज है उसके अंदर. और उसका जो टेस्ट है, बिफोर एंड आफ्टर, इट चेंजेस when it is introduced with all those healing capacities inside, with all the vibration, taste बिल्कुल बदल जाता है entirely, तुरंत के तुरंत. और लोग जब यहाँ पे हमारी गैदरिंग होती है, आई डू मेक दिस, लोग इतना इतना घर लेके जाते हैं, एक एक चम्मच सबको पिलाते हैं. कोई अगर कोई बहुत ज्यादा नेगेटिविटी से, या कोई कहते हैं ना इविल स्पिरिट से भी है अफेक्टेड, उसको भी आराम मिला है. बिल्कुल. हाँ. तो इसके असर मैंने बहुत देखे हैं. जस्ट नाउ यू वर शोइंग वन स्लाइड of she is actually from America, but now she is residing in Israel. Just this video was just before the war broke up, in Israel, just before, I mean. And she had some problem. She had 4 to 5 this operations in her stomach, and she was suffering like anything. और कॉन्स्टिपेशन इतना हाइप था कि उससे भी बहुत परेशान थी, बिकॉज वो उसका मतलब प्रोस एंड कॉन्स था ऑपरेशन का, एंड नो मेडिसिन कुड हेल्प हर. तो शी केम टू इंडिया फॉर आयुर्वेदा ट्रीटमेंट. सो शी वेंट टू साउथ, शी वेंट टू एवरीवेयर. हाँ, then she came to Rishikesh. I was there, I was taking sound class. She came for session the first day, and that very night she experienced that something is happening in her stomach. I had already told her everything, that this will be the pros and cons. So in the morning, her stomach was cleaned up, and she was so happy. I mean, this thing was beyond her imagination, that without any medicine. Once bowels are clean. अब वो 1 हफ्ते से she didn't go for motions, you can say, fresh नहीं हुई. बाप रे. वो बहुत परेशान थी. तो when next day she came, she was like, कि क्या मिल गया है, and she was crying, hug करके बस रो ही रही थी. तो फिर उसके बाद she said, no, I will learn this. And then she was very much amazed when she start playing. तो पहले दिन तो उसे बजा नहीं था,
दूसरे दिन उसको बजा, वो मुझे तो मतलब क्या हो रहा है ये। हाँ, we can see so much surprise, so much happy वो बजाने में कि she is able to do it. सो ऐसे ही बहुत सारे लोग यूक्रेन से भी थे, पहले रशिया से भी थे, क्योंकि वॉर थी वहां पे, तो दे केम टू इंडिया। तो मैंने उससे पहले उन लोग को हील किया, एंड दे वर ऑल इन ट्रांस एंड दे एक्सपीरियंस वेरी गुड एनर्जी, क्योंकि वो लोग बहुत ट्रोमैटिक उसमें माइंडसेट पे थे। सो ये बहुत ही वंडरफुल इफेक्ट इसका है। एक पर्सन मेरे पास आया, पूरी बॉडी, मतलब कई सालों से पूरी बॉडी जैसे कहते हैं दर्द में थी, और कोई मेडिसिन काम नहीं कर रही थी। Just 1 hour session. Only 1 hour session I gave. That is called sound bath. That is, combination of most of the, sound healing, this thing, instruments. So we have many instruments, and not only bowls itself, but many instruments. And when the person got up, he got up and he was moving. So I thought maybe he has some problem, he's moving. I said, do you have some pain in your back? No, it was there. I'm just checking it out. Where did it go? Because for last 2 years, I've never experienced a day when I was not in pain. Then he came, he just went, walked to the corridor, and then, went down the apartments, went round the garden and all. And he was just trying, ki whether somewhere he can experience, pain and all. So when then he came back, he said, this is miraculous. दंडवत प्रणाम भैया, मैंने कहा उठ जाइए आप, मैं हमारे यहाँ ऐसे नहीं चलता है, प्लीज मैं ऐसे मत करिए, है ना। And there was one lady, accidentally she was there in that in my block only, and she had come from abroad. She was staying there for only 15 days, and then she saw my board healer. Then she came and dropped in Rishikesh, I'm talking about. And then just for 15 minutes I gave her healing, sound healing. I said, okay, come and sit down, have fun with this, and all your anxiety will go away. I'm not going to touch you. So just after 15 minutes, she was okay. She was smiling, and she started hugging me. बहुत प्यार भी करते हैं, उनको प्यार मिला ही नहीं होता है, इतने खुश हो जाते हैं. And daily in the morning till she was there, whenever I used to in the morning, I used to open my door, I used to find some flowers every day for 15 days. Those were precious gift for me. And कितना हार्ट टचिंग है कि जब वो ठीक होते हैं और वो इस तरह से करते हैं, बिल्कुल, है ना। all hopes everywhere. Yes. सब जगह घूम के आ गए, और फिर अचानक जो मिलता है तो इतना खुशी. One young boy, he was 17 years old, and he came from abroad. So he was having some problem. उसको भी sound healing का उसको पहले किया, sound healing सीखा. Then when he was going back, he brought me one stone picked up from Ganga ji, and then he painted it, thank you, है ना. And बहुत अलग अलग तरीके से वो लोग थैंक्स करते हैं, बहुत ब्यूटीफुली, और अपने दिल खोल के करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत मैजिकल भी है, आनंद भी आता है, और ट्रांस में इससे ज्यादा डीपली कोई जा ही नहीं सकता. तो इससे बहुत सारे काम सिद्ध होते हैं. अब जैसे सपोज हमारे, अगर हम वाइब्रेशन की बात करें, अब मान लीजिए पेन है, तो हम लोग इसमें सिखाते हैं पेन की एक वाइब्रेशन है. अब उस वाइब्रेशन पे अगर हम हील करते हैं तो वो निकल जाता है. राइट, ठीक है ना. जैसे 125 हर्ट्ज की हीलिंग हम अगर करते हैं तो वो निकल जाती है. सो देयर आर सो मेनी. सपोज स्टमक है, स्टमक की प्रॉब्लम 11 हर्ट्ज. जैसे पैनक्रियाज है, उसकी है स्टमक की 110, हाँ, और पेनक्रियास की है 117. So these are the frequency. Now each ball has certain frequency, and it has up and down frequencies also, because when you start playing it and keep playing, तो क्या होता है कि वो frequencies ऊपर नीचे होती है.
और सबसे मिराकुलस है कि जो हम लोग सब चक्रास के पीछे भागते हैं ना, हाँ गुरुमा, आई थिंक ये बड़ा पावरफुल ये तो एकदम रामबाण है। आप अपने चक्र को इससे बेहतर तुरंत तो वो सप्लाई होती है एनर्जी, तुरंत तो ये लीजिए 369, ओके हियर डन। सो क्या होता है, ठीक है बाद में वो लूज करेगा एनर्जी, लेकिन तुरंत इसको भरने के लिए उस लेवल की एनर्जी, सपोज मूलाधार 367 369 70 है, अब उतनी एनर्जी में हम बहुत दिन लगाते हैं, सही बात है आने में, है ना। तो हम उस एनर्जी का बाउल लेते हैं और फिर उसकी एनर्जी थोड़ी देर ही प्ले करते हैं, मतलब 20 मिनट्स, एंड सो इफ यू स्टार्ट इनफ, आप देखोगे बॉडी विल स्टार्ट reacting, means changes will start come up in the body, and cells will, you will feel something is changing in me. ठीक है, राइट। तो ब्रेन के लिए तो इससे अच्छी चीज है ही नहीं, मतलब ये देखा गया, जबकि आप किसी में पार्किंसन डिसीज का नाम नहीं सुनोगे हील होते हुए। और इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कोशी बेल है, तिब्बतन बाउल्स है, गॉन्ग्स हैं, है ना, कोशी चाइम्स हैं, मोनोकॉर्ड्स हैं, हाँ, और टिंगशा, वो जो हम लोग जिसको बोलते हैं ना मंजीरे, बेल्स, हाँ, हाँ बेल्स एक मजीरे, होते हैं, हाँ हाँ राइट राइट, है ना, जैसे ये दीज आर द बेल्स। हाँ, तो आई हैव ऑलमोस्ट ऑल apparatus यूजुअली। अब जितने भी अपने सिविलाइजेशन में हैं वो आप इंक्लूड कर सकते हो, डमरू, हम शंख यूज कर सकते हैं, मैं बहुत शंख यूज करती हूँ, है ना, ये सब है। औरों के जैसे कि ट्राइब्स में जाते हैं तो ड्रम्स होते हैं, वो लोग Right, यूज कर लेते हैं। और अब क्या हो गया है, क्योंकि दिस सिस्टम इज taking a flight to every country, every every civilization. country, even Yes, shamans shamans and वगैरह all, में because बहुत they are all taking it up, and they are राइट also introducing their instruments, because राइट बैम्बू है या फिर आपका ड्रम है, जो आप नेचुरल ड्रम्स होते हैं, एक राइट, होते हैं ना, सो वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, बिकॉज उससे वो लोग जुड़े भी हैं। Above all, it's not only like just क्या कहते हैं, it's not just like healing your own self, it's just like just touching the universe, like you lose हाँ yourself entirely. एब्सोल्युटली, ये बहुत प्रोफाउंड इम्पैक्ट है। बहुत ज्यादा। तो आप ये सोच लो कि कितना इसमें जान है। अब मैं थोड़ा सा फिर जरा सा हम लोग आज करें, आई थिंक। हाँ, आपसे वही तो सबके लिए बहुत ही सुखद अनुभव होगा इफ वी कैन हैव अ टेस्ट ऑफ सम सबसे भी गुड। पूछ लेते हैं थोड़ा सा, कहते हैं ना आर्टिस्ट को थोड़ा आनंद आता है इफ दे जस्ट सेड हाँ सम प्लीज, emojis, if they want to. I think everybody should say right in the chat, do you want some taste of that Yes, healing yes, it should be from accepted. Guru Ma? So आपको It चाहिए is तो प्लीज लिखें। it is fun, this is fun also, yeah. तो एक चीज और है, when we add, yeah, thank you, Thank you, yes. thank you, Mona Deepa is from Bengal, yes, thank you, thank thank you. you। एक चीज और, जो अक्षर हैं जैसे कि लम वम, वो भी आप इसके साथ में अगर प्ले करते हो Oh, तो right, सिलेबल्स प्ले अ ग्रेट रोल। right, month, अभी जैसे वो बोल रहे थे ना, दीज आर द नेचुरल साउंड sound, एंड दीज आर sound, तिब्बतियन साउंड्स, right, है ना, जो ये साउंड्स है ना, ये बहुत। तो मैं तो पहले तो रिक्वेस्ट करूंगी कि हम बहुत आदर सम्मान के साथ में इन बाउल्स को, बिल्कुल हम हेवन समझते हैं, ईश्वर की दिए हुए ये इंस्ट्रूमेंट हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने इन्हें बनाया है अपने ऊपर के आशीर्वाद के तहत, उनको जो प्रेरणा मिली, और बुद्धिस्ट मॉन्क्स की इसमें बहुत वाइब्रेशन छुपी हैं। तो जब भी प्ले करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड से हम सभी वाइब्रेशन अट्रैक्ट कर रहे हैं, और वो सबके भलाई के लिए।
So now सब आराम से बैठेंगे और अभी मूलाधार पे केंद्रित करेंगे। तो जब मैं मूलाधार बोलती हूँ तो वो नीचे मूलाधार है, उससे ऊपर स्वादिष्ठाना है, so it can fluctuate. So you will just enjoy the sound, submit to the sound, and with great regard, humbleness, just invite this beautiful energy in you. With your intention, it heals everything.
I think probably Guru Maharaj got disconnected. She should be joining soon. But it is so wonderful, so powerful. I think it's sakshat blessings. Probably we can experience, the sounds. And all the sounds that we experienced were basically on different chakras, different frequencies. And the impact, maybe we may not feel right now, but surely the impact will be felt over next few days also. So I think with lots of gratitude and lots of thanks to Guru Ma. So anybody, let me just check what is happened. हाँ विक्रम जी आप बोल सकते हैं. Yeah, Subhra ji, हम लोग I think probably Guru Ma is facing some problems, some network issues probably. So maybe we'll have a session and we will soon also, जो लोग भी इसमें interested हों सीखने के लिए, there are very few teachers, genuine teachers in the country now for sound healing, और Guru Ma is one of them. So वो offline सिखाती हैं in Rishikesh, but I am trying to request her कि ये ऑनलाइन भी एक बार शुरू कर दें for all of us. So everybody, those of you who are interested, kindly join the WhatsApp group. The link of WhatsApp group is given in the this description of the video, the YouTube video. So be sure you are in that group, and very soon we will come out with details of the course or the classes and कैसे करेंगे, and it will be very, very powerful. So, so Subraji, be part of that group. I'm sure you will be, and we will soon have this course. Anybody else wants to say anything or experience anything? हाँ गुरुमा, you got disconnected. Welcome. आप म्यूट पे हैं. अनम्यूट करें. हाँ गुरु. It's okay. Net got disconnected. I don't know why. हाँ मैं इसीलिए बोल रहा था सबको. So it happens, और कभी कभी हो जाता है ऐसा. So एक जैसे हमारी ये बेल है, इससे भी घर की पॉजिटिविटी आप देखो. इसका दूसरा तरीका भी है.
इसका दूसरा ये साउंड्स हैं, डिफरेंट साउंड्स की हम बात कर रहे थे। थोड़ी सी लय तो वो हुई, लेकिन आई थिंक थोड़ा सा तो एंजॉय किया होगा। एंड और इज अ स्मॉल गॉन्ग, especially for online. I just pick up the small gong because everyone can see this. So these are a few apparatus which I just picked up today for knowledge sake, but there are many more, and sometime we will design one, sound bath in that. they are कि एक course, if we can design online course. It is there. It is there. We don't have to design because it is there only. So we can easily do that if our And love. I was telling everybody जब आप disconnect हो गई थी कि there are very few genuine healers, genuine sound healers in the country. और Yes. गुरु, we are so fortunate कि हमको आप जैसा एक वो गुरु मिलेगा. It will be really a blessing for all of us. आप ये जुड़े हुए हैं ना, और आप जोड़ भी रहे हो, आप जो कार्य कर रहे हो ना, मैं तो सिर्फ पढ़ा ही रही हूँ, लेकिन जो आप कनेक्ट कर रहे हो ना, ये बहुत बड़ा काम होता है। तो मैं आपको धन्यवाद करूंगी, और लोगों को सीखना चाहिए सबको। मुझे लगता है कुछ चीजें, हीलिंग, साउंड हीलिंग, आप सब बच्चों का, सबका भला करते हो, पूरे घर को चार्ज अप रखते हो, और आप देखो तरक्की ही तरक्की है। मतलब हैप्पी भी फील करोगे, एनर्जाइज रहोगे। तो ये सब कुछ बातें हैं। तो आप आगे बताएं। हाँ, किसी के अब कोई प्रश्न हो, कोई क्वेश्चन हो, पहले तो ये पूछ लीजिए, एंजॉय किया नहीं किया सेशन को, और किसको फील हुआ था? एक्सपीरियंस अगर हो तो वो भी शेयर, और आज के एक्सपीरियंस, क्वेश्चंस, एनीथिंग, सो यू कैन रेज योर हैंड्स। और अब ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएं। राजेश जी कह रहे हैं थैंक यू। रिलैक्स तो तभी हो जाते हैं, बिल्कुल एकदम जैसे ही आनंद होता है, बस माइंड रिलैक्स। विक्रम विश्वकर्मा जी, बोलिए विक्रम जी, आप अनम्यूट करिए। हाँ, आपका आवाज नहीं आ रहा है। विक्रम जी, आप बोल रहे हैं? ग्रेट पवित्रा जी। हाँ, पवित्रा जी इज फीलिंग सो मुझे बहुत खुशी होती है जब वो रिजल्ट देखते हैं, तो मुझे बहुत आनंद आता है। और आपने तो इतने सारे एग्जांपल्स बताए कि इतना स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स एंड डिजीजेस एंड so many things we can overcome, so कहते हैं ना, जादू की छप्पी लग गई हो, ऐसे बोलते हैं ना, कि बस तो वो ये पिटारा है। ये तो ऐसा पिटारा है कि इसको तो अनमोल है, ये वाकई अनमोल है। कुछ भी देकर अगर ये मिल जाए तो जीवन सफल हो जाए। लेकिन मैं तो बहुत ही रीजनेबल, मैं तो चाहती हूँ, जो मेरा मन है कि लोग सीखें, बढ़ें, और ये पॉजिटिविटी अगर हम लोग के ट्रांजिट होने से पहले हम जो भी दे पाए, खूब पॉजिटिविटी जितनी ज्यादा पहुंच जाए, तो शायद जीवन सफल होगा। मैं अपना भी सोचती हूँ कि जीवन सफल होगा।
आवाज नहीं आ रही थी विक्रम जी की। आवाज नहीं आ रही थी, तो प्रफुल्ल कुमार जी बोलेंगे। आप अपना क्वेश्चन लिख दीजिए। अगर यू टेल विक्रम टू राइट द क्वेश्चन, आई थिंक। कर दीजिए, यू कैन अनम्यूट सर। प्रफुल्ल कुमार नाथ जी, यू हैव रेज्ड योर हैंड, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। वॉइस नहीं आ पा रहा है। आज मुझे लगता है कि है भी। बोलते भी रहेंगे, सब सुनते भी रहेंगे। आज साउंड का है। So we have some chats और I think आज कुछ है प्रॉब्लम उसमें, जी जी, नेट में मे बी। मैं सभी से रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएं, जिसका कि लिंक हमारे यूट्यूब वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और फिर जो प्रोग्राम गुरु माँ से बात करके प्रोग्राम का डिटेल्स और ड्यूरेशन एवरीथिंग आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू विक्रम जी, थैंक यू धीरज जी। विक्रम जी कह रहे हैं बहुत अच्छा लगा। हाँ, थैंक यू सो मच। धीरज जी इज सेइंग प्रणाम। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू डिवाइन सोर्स। आपसे आज्ञा ली जाए और चले, जो ऐसे ही करते रहें जीवन में, हम लोग आपस में जुड़े रहें, खुश रहिए। गुरुजी नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद। তোমাৰ এইটো ষ্টেপ এনেকে লিখিছো, ষ্টেপ এইটো টিচাৰ্ছ এক্টিভিটিজ টো এনেকে লিখিমনে কিবা হ'ব এনেকে 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 লাইনকে এনেকে যেনেকে আছে এইটো এনেকে লিখা জাগাত এনেকে লিখিলে কিবা হ'ব নেকি? বুজিছো এনেকে এনেকে লিখবা। थैंक यू ऑल। हाँ ग्रुप, विक्रम जी आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जब आप यूट्यूब में वीडियो खोलेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में